हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे दैट इज द करेंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के जलधाराओं पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इफ यू लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, every now and then you'll find this topic being asked in prelims examination as well as in the mains examination. So oceanography में this is the most important topic that you cannot afford to skip when you go for the prelims examination or for the mains examination. So having said so, let's say the question जो इस एरिया से पूछा गया है. So this was the question that was asked in the year 2021. We'll take up the question later, but अभी उससे पहले let's have certain discussion about the oceanic currents. So आज का जो टॉपिक है that is the currents of Atlantic Ocean. But before I start with the major currents that flow in the Atlantic Ocean, एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि what exactly do we mean by oceanic currents. So oceanic currents are basically a large mass of water flowing in a particular direction, flowing in a specific direction. एक बहुत बड़ा मास वाटर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब फ्लो करता है, सो दिस फ्लोइंग वाटर मास इज कॉल्ड करंट. सो करंट का मूवमेंट अक्रॉस द डेप्थ भी हो सकता है, ओशन के डेप्थ के अक्रॉस भी हो सकता है, एंड करंट का मूवमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन वाटर भी हो सकता है. तो अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे विल फोकस ऑन the currents flowing on the surface of the water. So when I say कि the water flowing on the surface, it means that up to 100 मीटर, 100 से 150 150 मीटर डेप्थ तक हम लोग सरफेस वाटर को करंट के फॉर्म में देख रहे हैं. So now let's draw this Atlantic Ocean. So we know that Atlantic Ocean is being surrounded by North America and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern side. So let's draw this. This is equator and this part I am drawing as Africa. This is Africa continent, and over here we'll see Jutland Peninsula and then Baltic Sea, then Spain, Portugal and all. This is Mediterranean Sea. So this part is Europe. This one is Africa, North America and South America. And the ocean here is, this part is the water body, a large water body called Atlantic Ocean. And over here you can see that we have Greenland as well, and over here you'll find Iceland. So this one is Greenland, this one is Greenland, and this is Iceland. Anyway, now let's see the different currents which flow in Atlantic Ocean. तो स्टार्ट करते हैं इक्वेटोरियल रीजन से. तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पहले देखते हैं. तो आई एम ड्राइंग द फर्स्ट करंट. दिस इज कॉल्ड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट. नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट नॉर्थ अटलांटिक ओशन में under the influence of easterlies. If you remember,
इस जोन में जहां पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेड विंड्स का डोमिनेंस होगा या ईस्टर्लीज का डोमिनेंस होगा। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्लीज, the surface water, which is obviously the current, flows from east to west, and this current is called north equatorial current. North equatorial current. So this is flowing from east to west, east of the ocean. So flowing from east to west. And if you look at this current, this is present in the equatorial region. So it is a warm current. It is a warm current. The same current, after striking this configuration, this part of the uh, South America, it will move rightward. It will move like this. One reason for this rightward movement is the physiographic configuration of South America and North America. Another reason is it is deflecting rightward due to Coriolis force acting due to rotation of the earth. So अपने को पता है कोरियोलिस फोर्स पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया था कि नदर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स causes rightward movement. तो ये rightward movement हो गया. Over here in this part, second number if I give, this current is called Antilles current. क्योंकि यहाँ पे एंटिलीज आइलैंड्स हैं कैरेबियन सी के ऊपर. एंड दिस करंट इज कॉल्ड, थर्ड नंबर दे दो इसको, यहाँ पे इस पार्ट में फ्लोरिडा के नीचे इट इज कॉल्ड फ्लोरिडा करंट, और दिस करंट इज ऑल्सो कॉल्ड गल्फ करंट. So second, the Antilles current, after striking the North America, it again moves further rightward. आप देखिए further rightward. This current under below Florida is called Florida current or Gulf current क्योंकि ये Gulf region है. And this current flows under the influence of westerlies. Over here temperate region है ये, temperate region में westerlies are dominating. So under the influence of westerlies, it flows from west to east, and this current, if I give it 4 number, is called North Atlantic drift. एक क्वेश्चन आ सकता है मन में कि सर ड्रिफ्ट क्यों बोल रहे हैं, करंट क्यों नहीं बोल रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ड्रिफ्ट्स आर बेसिकली लार्ज वॉल्यूम ऑफ सरफेस वाटर flowing with relatively lesser speed compared to the current. तो करंट और ड्रिफ्ट में ड्रिफ्ट का स्पीड रिलेटिवली कम होता है, तो इसलिए इट इज मूविंग, इट इज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस साइड से एक करंट और आती है, लेट मी गिव इट नेम 5. तो फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे अगर आपको याद हो ये लैब्राडोर रीजन है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लैब्राडोर करंट. लैब्राडोर करंट. तो लैब्राडोर करंट इट इज अ कोल्ड करंट. कोल्ड करंट किसको बोलते हैं? एक्चुअली एनी करंट विच मूव्स फ्रॉम पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर. जब भी वाटर सरफेस पे वाटर का मूवमेंट पोल से इक्वेटर की तरफ होगा, सच करंट वुड बी कॉल्ड कोल्ड करंट. तो इसलिए लैब्राडोर अगर आप देखो तो पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ मूव कर रही है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ कोल्ड करंट. तो ये कोल्ड करंट और दिस थर्ड करंट जिसको हमने फ्लोरिडा या गल्फ करंट बोला है, दिस मिक्सेस हियर, एंड दिस फोर्थ करंट विच इज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बिकम्स वॉल्यूमिनस करंट. बहुत वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, इसलिए स्पीड कम हो जाती है. मोर ओवर, ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ दीज टू करंट्स, गल्फ करंट एंड लैब्राडोर करंट, this is the reason
off the coast of Newfound Island and New England. This is the reason which is rich in fishing. So that is the reason that over here in this part along the coast of Newfound Island and New England, fish farming is done at a very large scale, commercialized level. तो जो हमने नॉर्थ अमेरिका के रिसोर्सेज में ऑलरेडी डिस्कस किया था. एनीवे, सो फोर्थ करंट एंड फिफ्थ करंट देख लिया हमने. दिस फोर्थ करंट अगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, इसका फर्दर राइटवर्ड मूवमेंट होगा ये. दिस करंट इज कॉल्ड कैनरी करंट. इसको मैं 6th नंबर देता हूं. 6th नंबर करंट इज कॉल्ड कैनरी करंट. कैनरी करंट क्यों? क्योंकि यहां पर एक आइलैंड है ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका विच इज कैनरी आइलैंड, तो उसी के नाम पे कैनरी करंट. A portion of this North Atlantic drift moves in this direction. ये नॉर्वेजियन एरिया है, ये नॉर्वे है, तो दैट इज वाई दिस करंट, अगर मैं इसको 7th नंबर दूं, इज कॉल्ड नॉर्वेजियन करंट. नॉर्वेजियन करंट ध्यान से देखिए, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है तो वार्म करंट. यस, एनीवे, देन इसी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का एक पोर्शन मूव्स along the west coast of Iceland. ये आइसलैंड मैंने बताया था, इसके वेस्ट पार्ट में इट इज कॉल्ड, लेट मी गिव इट नंबर 8. दिस 8th number is Irminger current. Minger current, Irminger current. And across this Greenland, across this eastern coast, एक करंट आती है नीचे के साइड में which mixes with लैब्राडोर करंट. आपको लग रहा है पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है ये 9 नंबर की करंट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ईस्ट ग्रीनलैंड करंट. डोंट यू थिंक दिस वुड बी अ कोल्ड करंट? And it further mixes with Labrador current. So that is why Labrador current is also a very strong current, very strong cold current. Obviously, later on it mixes with the Gulf current of the coast of uh, northeastern part of US, which is Newfound Island and New England region, and वहाँ पे fishing activity commercialized level पे होगी. Anyway, so these are the 9 currents found in the North Atlantic Ocean. Now let's see the South Atlantic Ocean. Similar to North Equatorial Current, Southern Atlantic में South Equatorial Current होगा. So let me give it number 10. This was number 1. So this number 10 is South Equatorial Current. South Equatorial Current, which is again under the influence of easterlies or trade winds, क्योंकि tropical region में trade winds dominant का, तो under the influence of trade winds, it is again moving from east to west. Again, it is a warm current. It strikes with the eastern coast of South America, and this another current, 11th number, is called Brazil current, क्योंकि ये ब्राजील का कोस्ट है. यहां पर अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखेंगे तो यहां पर आपको एक आइलैंड दिख रहा होगा. दिस आइलैंड इज कॉल्ड फॉकलैंड आइलैंड. तो यहां से एक कोल्ड करंट, क्योंकि पोल से फिर से इक्वेटर की तरफ आ रही है, सो दिस कोल्ड करंट, आई विल गिव यू 12th नंबर, इज कॉल्ड फॉकलैंड करंट. Obviously, it is a cold current. Cold क्यों?
क्योंकि पोल से, साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ जा रही है। इस पार्ट ऑफ द ओशन में जब आप आएंगे, सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे देयर इज एब्सेंस ऑफ लैंडमास, कॉन्टिनेंट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक परमानेंट करंट फ्लो करती है विच इज कॉल्ड, 13 नंबर में दे रहा हूं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। इट इज अ परमानेंट करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द ग्लोब। ये केवल साउथ अटलांटिक ओशन में नहीं, आपको पैसिफिक में भी मिलेगा, साउथ इंडियन ओशन में भी मिलेगा। तो जब इंडियन ओशन और उसका डिस्कशन करेंगे तो विल सी दैट। देन अ पोर्शन ऑफ दिस वेस्ट विंड ड्रिफ्ट moves off the coast of Africa, and this current, let me give it number 14, is called Venezuela current. Venezuela current. तो ये Venezuela current, and then obviously it again becomes the part of South Equatorial current. There is one more current over here. If you look at North Equatorial current, this current, and South Equatorial current, these two currents are moving from east to west. Don't you think over here in this zone there would be piling of the water, the current, due to continuous movement of north equatorial current from east to west? तो यहाँ पे जब पाइलिंग ऑफ वाटर होगा, तो जैसे ये मान लेते हैं इक्वेटोरियल रीजन, ये एक करंट इधर से नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये साउथ इक्वेटोरियल, यहाँ पे पानी अगर खूब इकट्ठा हो रहा है तो आफ्टर सम टाइम आपको नहीं लग रहा यहाँ पर वाटर सरफेस लेवल थोड़ा सा राइज कर जाएगा, और ये अगर सरफेस राइजन होगा तो ये पानी काउंटर मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ सरफेस ऊपर हो गया, तो कुछ ऐसा आपको बेसिन दिखेगा। तो दिस विल मूव लाइक दिस। सो दिस करंट यहाँ से एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट मूव करती है। दिस इज कॉल्ड काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। काउंटर इक्वेटोरियल करंट, तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्यों फ्लो कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डायरेक्शन कैसी है? वेस्ट टू ईस्ट। क्यों फ्लो कर रही है? क्योंकि यहां पर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इक्वेटोरियल Atlantic Ocean, there is piling of water, and due to this pilation of water, the sea surface level in the equatorial Atlantic Ocean in the eastern part rises up, and due to this rise of the water starts moving in the opposite direction, in the counter direction. Anyway, so these are the 15 currents that you should know with respect to Atlantic Ocean. So एक बार वार्म और कोल्ड करंट को देख लेते हैं। मैं एक डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं फॉर द कोल्ड करंट्स। Okay, I'll use yellow for the cold currents. So north equatorial current, it is a warm current क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में। Second is part of north equatorial current only, so again it is a warm current. Third, Gulf current is again a warm current. Fourth, North Atlantic drift, again moving from equator towards the pole, so that is why again a warm current. Seventh, this Norwegian current moving from equator towards the pole, warm current. Eighth, which is Irminger current moving from equatorial to the pole, again a warm current. 9 number, it is a cold current. Why? Because it is coming from pole towards the equator. Similarly, Labrador current, again coming from north pole towards the equatorial region, so again becomes a cold current. Similarly, coming to this current, 6 number current, see, this is again coming from pole towards the lower latitudes, towards the equatorial region, so this is again a cold current, which is a Canary current. Then coming to South Atlantic Ocean, South Atlantic Ocean में obviously South Equatorial current is a warm current. It is a warm current.
Then this one is again a warm current. But look at this current, 12 number current, which is Falkland current. It is a cold current. Why? Because it is coming from equator towards the lower latitudes, towards the equator. Sorry, it is coming from pole towards the lower latitudes, towards the equator. So that is why it is a cold current. Similarly, this one is a cold current. Why? Because this is moving from again south pole towards the equator. So this is a cold current. It is a Benigula current. This one. So this one is a cold current. Falkland is a cold current. Then Canary is a cold current. East Greenland is a cold current. And I must have written Labrador somewhere. This is a cold current. And if you talk about west wind drift, it is also relatively a cold current because it is flowing in the southern part of the southern Atlantic Ocean. So this was about the different currents flowing in the Atlantic Ocean. These currents have huge economic and geographical significance in different parts where they flow that we can take up later on. So this is about the today's discussion. Thank you so very much. All the best.